Hello everyone, welcome to the class and we are starting surgery previous year topics on the Phalanx part 2. We already discussed part 1 many topics. Yes, and this previous year topics of PYT on the Phalanx is a summarized session where we covered last 5 year previous year topics of the NEET PG in the single session. Yes, so this is the part 2 of the continuation of the part 1. Yes, so please comment about the audio visual so we can start the session. Yes. सो हाइड्रोनेफ्रोसिस हाइड्रोनेफ्रोसिस एक्सरे में क्या दिख रहा है हाइड्रोनेफ्रोसिस D4 dilated clubbed calyces seen in hydronephrosis. So this exact X-ray was asked in the NEET PG. Now next is acute pyelonephritis. So as you know, acute pyelonephritis, the root is the ascending route of the infection, and this is the most common in young sexually active women, and this present with the fever, with chills and rigor, and also vomiting. So where we found the chills, rigor with the fever, yes. So कहाँ मिलता है? Yes, this is on the cholangitis, malaria, meningitis, pyelonephritis, pneumonia. This type of the causes where we see fever with chills rigor. So fever with chills rigor कहाँ मिलता है अपने को? यस इसका निमोनिक है CAMP कोलेंजाइटिस एब्सिस मलेरिया मेनिंजाइटिस पाइलोनेफ्राइटिस एंड न्यूमोनिया. सो दिस इज पाइलोनेफ्राइटिस. सो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या मिलेगा अपने को? फीवर विद चिल्स राइगर एंड आल्सो वोमिटिंग. इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस इसमें CGT करेंगे. ट्रीटमेंट ऑब्वियसली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. सो यू कैन सी pyelonephritis, the organism is a proteus, pH is alkaline because in acidic pH bacteria destroyed. So alkaline pH is supportive to the proteus infection and promote the formation of the struvite stone. So पूछ सकते हैं इसमें किस तरह का stone मिलेगा? तो struvite stone मिलेगा. Yes. Yes. Now, so next topic is the seminoma. So seminoma is the name suggests. Seminoma means saman means sam means anything. Sam means homogeneous. So this tumor is a homogeneous consistency, uniform tumor cell in a histology with abundant clear cytoplasm and large central nuclei. So Samsung means homogeneous. So this present with the gray, white, fleshy, homogeneous mass with lobulated cut surface. And because this is a homogeneous, there is some seminoma. Sam मतलब एकदम शांति वाला ट्यूमर है. Because there is a no hemorrhage, there is a no necrosis. So this is very calm tumor. So there is a no hemorrhage, there is a no necrosis. Now next previous year topic is yolk sac tumor. So yolk sac tumor Y4 you can say this is yellowish white mucinous appearance and a Schiller dual body sin. So yolk sac Schiller dual कैसे लिख सकते हैं DYAL. So Y से बनेगा यहाँ पे yolk sac tumor. Yes. Now injury to the bladder. Two type of the injury, bulbar urethral injury and a bulbomembranous junction. Yes, distal urethral injury and a proximal urethral injury. दो में divide कर देते हैं. So bulbar urethral injury, you can remember bulbar has a so many B and B. So before there is a bruise in the perineum, obviously blunt trauma in the perineum or the bladder, and the blood at the urethral meatus is seen in both distal and the proximal urethral injury before butterfly hematoma. Butterfly hematoma. This things is important. Butterfly hematoma. Yes, butterfly hematoma and bicycle. कैसे क्यों होता है ये होता है बिफोर बाइसाइकिल मेन होल जिम या सैडल इंजरी से हो सकता है एंड इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है मींस बल्बर यूरेथ्रल इंजरी आर मोर कॉमन बिफोर बहुत कॉमन मींस मोर कॉमन ये होती है और बिलो यूरोजेनाइटल डायफ्राम. सो दिस इज सिचुएटेड बिलो द यूरोजेनाइटल डायफ्राम. Yes, please give me the response about the audio. Yes, yes. तो बल्बर यूथ्रल इंजरी में क्या देखा अपन ने कौन कौन से बी इसमें मिले हैं? यस, अब एक्टिव रिकॉल करेंगे और कमेंट सेक्शन में कौन कौन से बी आपको बल्बर यूथ्रल इंजरी में मिलेंगे? Yes. Before, bruise in perineum, very good. Blunt trauma, blood at the urethral meatus, butterfly hematoma, bicycle और जिम और सैडल इंजरी से होगा. ज्यादा कॉमन है बिफोर बहुत कॉमन और बिलो यूरोजेनाइटल डायफ्राम.
Yes, so in this critical phase of the preparation where just 30 days left, you have to practice the active recall also. Yes. Now, next is proximal urethral injury. So proximal urethra कौन सा होता है? बल्बो membranous junction. So proximal में P आता है. So P से ही सब कुछ बनने वाला है यहाँ पे due to pelvic fracture और RTA. Yes, prostatic and membranous urethra are affected or injured. Yes, prostate high riding on the digital rectal examination and we found vermentomon sign. Yes. एंड पी मीन्स डीप पेरिनियल ट्रोमा से होगा यहाँ पे डीप में क्या आता है पी सो डीप पेरिनियल ट्रोमा से ही होगा और ब्लड एट द यूरेथ्रल मीटस ये दोनों में मिलता है सो प्रोक्सिमल यूरेथ्रल इंजरी में क्या आता है पी से याद रखेंगे किससे होगा पेल्विक फ्रैक्चर से क्या इन्वॉल्व होगा इसमें पी से ही प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा यस और प्रोस्टेट को हाई राइडिंग कर दो तो इसको बोल देंगे वेरोमेंटमम साइन और ये क्या है कि डीप प्रोक्सिमल में हो रहा है तो डीप यूरेथ्रा होता है प्रोक्सिमल इसलिए डीप पेरिनियल ट्रोमा में दिखता है यस तो नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सो ट्यूबरकुलोसिस को कैसे देखते हैं टीएनबी से बनेगा थिम्बल ब्लैडर सो थिम्बल ब्लैडर स्टार्टेड फ्रॉम द टीएनबी so thimble is the TNB. So this is seen in the TB, tuberculosis of the bladder. So pallor of the mucosa around ureteric orifice due to submucous edema. This is a special sign. Pallor of the ureteric orifice, pallor of the mucosa around the ureteric orifice due to submucous edema. Yes. So treatment is augmentation cystoplasty. Yes. Next is a TB ureteric lesion. TB ureteric lesion. So you can say there is a Kurt's kinks. Yes, Kurt's kinks or golf hole ureter. Again treatment is re-implantation. So ureteric lesion TB ureteric lesion की TB हुई तो उसमें आपको golf hole ureter मिलेगा और implantation आपको करना पड़ेगा. Yes. तो सबसे कॉमन साइट फॉर द एक्टोपिक टेस्टिस इज द सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच सबसे मीन्स द मोस्ट कॉमन सो S4 सबसे S4 सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच is the most common site of the ectopic testis. Yes. Now, hypospadiasis operation routinely कब करते हैं? Hypospadiasis is the S4 6 so 6 to 18 month of the life. Yes. And most common complication of this operation is ureterocutaneous fistula. Now, next is the end stage renal TB. So, in end stage renal TB, the TB appears as a putty. So, putty kidney. Putty में क्या आता है? Double T. Putty has a double T. TT means the TB. So, homogeneous ground glass like calcification. Putty has a T. So, T for TB, P for pus. So, pyuria, sterile pyuria. Yes, pus is absent, pus is out. So, sterile pyuria. सो यहाँ पे क्या है पुटी किडनी टी आ रहा है तो किसमें मिलता है टी ट्यूबरकुलोसिस में यस तो पुटी किडनी टी फॉर ट्यूबरकुलोसिस टी फॉर सीटी सो सीटी इज मोस्ट sensitive investigation and this is always secondary to do pulmonary TB. Yes, so यहाँ पे देखेंगे थिम्बल ब्लैडर इज द TB सो TB में दिखता है पुटी किडनी इज द TT सो TB में दिखता है. यस नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अपन द यूरेथ्रा. यस सो Prostatic and membranous are proximal urethra and bulbar and penile are the distal urethra. So how we can remember PMBP? PMBP. So PM means प्रधानमंत्री का BP बढ़ गया प्रधानमंत्री का BP बढ़ गया तो आपको याद हो जाएगा इसका ऑर्डर क्या है prostatic, membranous, bulbar and penile. Yes, this order help us to remember many time in the RGU study. Yes, उसमें काफी बार पहचानने में आता है कौन से यूरेथ्रा को इंजरी हुई है. आगे देखते हैं अपन पार्शियल नेफ्रेक्टोमी. सो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी मींस द नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी. सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर. सो हाउ यू कैन रिमेंबर दिस ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर. 4 को हिंदी में क्या बोलते हैं? चार. चार पार एक जैसा बोलने में आता है चार पार. सो चार सेंटीमीटर में क्या करेंगे? पार मीन्स पार्शियल नेफ्रेक्टोमी मतलब क्या बनेगा? नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी. यस सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल सेल कार्सिनोमा. किडनी का ट्यूमर पड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रीनल सेल कार्सिनोमा. कब पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करेंगे अपन? जब ट्यूमर होगा 4 सेंटीमीटर से कम का और वेल सेलेक्टेड ट्यूमर बिटवीन 4 to 7 सेंटीमीटर. बायलेटरल ट्यूमर इन सोलिटरी किडनीज. यस पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग रीनल डिसफंक्शन एंड स्टेज 1B. बी मीन्स जस्ट इनिशियल 1B. सो जब दोनों तरफ ट्यूमर है तब थोड़ा तो बचाना ही पड़ेगा. काम कैसे चलेगा? सोलिटरी किडनी में तब भी आपको बचाना पड़ेगा. पहले से किडनी की बीमारी है तब भी आपको किडनी को बचानी पड़ेगी तो उसमें अपन नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी करते हैं. नाउ आरसीसी को क्या पढ़ते हैं? यू कैन राइट आरसीसी एज अ सी. सो आर मीन्स रेडियो, सी फॉर आर फॉर रेडियो, आर फॉर रेजिस्टेंट. यस कीमो रेजिस्टेंट. सो यू कैन से यहाँ पे सी आर मीन्स कीमो रेजिस्टेंट. यस
and radio resistant. So this is chemo and radio resistant. दोनों से resistant होता है, chemo resistant and radio resistant tumor. Now, so next is histological subtype of the renal cell carcinoma. So most common is clear cell type. So C4 clear cell type, C4 common, most common, C4 convoluted tubule, proximal convoluted tubule is the origin. C is the third letter, so you can remember the third chromosome 3p and just double is 6p deletion. So 3p and 6p deletion are there, and clear cell type C is the third letter. So three-letter word VHL, three-letter word VHL. Von Hippel-Lindau syndrome is associated. So von Hippel-Lindau syndrome and tuberous sclerosis associated with this clear cell type of the RCC. Now papillary type. So papillary started from the P. So P मतलब कहाँ पे होगा PCT, DCT. Yes, P4 some mama body is there. P4 papillary renal cell carcinoma. And you can remember this is caused by this c-met mutation, c-met mutation. So PCT में होता है PCT, C से लिख दो c-met mutation, c-met mutation. Yes. So micropapillary variant is found in the long term dialysis. So long term dialysis पे कोई है तो काफी सारा अपन उसके ऊपर पाप कर रहे हैं, इतने सारे लंबे टाइम तक डायलिसिस पर रख के, तो काफी बुरी सिचुएशन है, काफी लंबा पाप कर रहे हैं, पाप मतलब पेपिलरी. So micropapillary variant is associated with the long term dialysis. Yes. Now, so next is chromophobe type. Chromophobe is a for F. So you can remember this is full of the colors means the best prognosis. Chromophobe में क्या आता है? Chromo means colors. Colors is always good. So always good means best prognosis and originated from the intercalated disc. So chromophobe colors, so many colors, interchanging the colors. So intercalated disc is the origin and this is the best prognosis. Yes. And there is a loss of the multiple chromosome and extreme hypodiploidy is there and associated with Burt-Hogg-Dubé syndrome. So Burt, you can remember Burt, you can read Burt as a birds and you see birds in the different color. Color means again chromo. So chromophobe means chromo means color, birds are colorful, something color means Burt-Hogg-Dubé syndrome, Burt-Hogg-Dubé syndrome. Yes. Now, so plant resin are colorful, so you can remember cytokeratin positive on the immunohistochemistry. So what you remember in the chromophobe में क्या पढ़ा? Chromophobe में क्या आता है? कलर, कलर अच्छे होते हैं, अच्छा प्रोग्नोसिस है. कलर बर्ड में होता है, बर्ड होग वाला सिंड्रोम इसमें आ जाएगा. सब कलर में इंटरमिक्सिंग हो जाती है, इंटरकलेटेड डिस्क से आ जाएगा. उसमें लॉस ऑफ द मल्टीपल क्रोमोसोम हो जाता है. यस, इतने सारे कलर मिलके लॉस भी हो जाते हैं. अगला देखते हैं अपन कलेक्टिंग डक्ट और बेलिनी टाइप. सो दिस इज सबसे बैड प्रोग्नोसिस. सो बेलिनी मीन्स बेलन, बेलन की पड़ेगी तो सबसे खराब प्रोग्नोसिस होगा. बेलिनी डक्ट इज अ रोस्ट प्रोग्नोसिस. सो कलेक्टिंग टाइप इज बेलिनी इज अ रोस्ट प्रोग्नोसिस. Yes, so originate from the collecting tubule and deletion on the chromosome 1 and monosomy of the multiple chromosomes. Yes. So next is medullary type. So med is obviously bed. Med is bed. So this is a bed of the poor prognosis. And med में क्या आ रहा है? Med is a D. So D4 this is originated from the DCT distal nephron and associated with the sickle cell anemia. Yes, medullary type associated with the sickle cell anemia. So you can remember med cycle like the bicycle. Med cycle means medullary cycle कहाँ होगा? Sickle cell anemia में. तो medullary कहाँ मिलता है अपने को? Sickle cell anemia. Yes. Now, next is sarcomatoid changes can occur infrequently in all type of the renal cell carcinoma and this is an omnious feature. Yes. तो ये हो गया यहाँ पे. अगला टॉपिक अपन देखेंगे प्रोस्टेट लोब्स. यस, सो अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे कि लॉस ऑफ द मल्टीपल क्रोमोसोम्स कौन से टाइप के रीनल सेल कार्सिनोमा में मिलता है? लॉस ऑफ द मल्टीपल क्रोमोसोम्स. यस. नाउ, so next topic is prosthetic lobe. So uvula vesicki is asked. Uvula vesicki is related to the median lobe. So you can remember med for you, med for median lobe, U for uvula vesicki. Yes. So prosthetic lobe, anterior lobe as a no glandular tissue, anterior as a N and for no glandular tissue, posterior as a P for posterior, P for peripheral, P for prosthetic cancer. So most common site of the prosthetic cancer, P for posterior, no glandular tissue, and for anterior. Yes, and BPH, most common site of the BPH. B means beach ka means the median. So median lobe or the transition zone. Yes, means the periurethral. You can remember. Now,
Gleason grading किसके लिए होती है? Gleason for the prostate and this is used as a stage of the histopathological examination. Less than score 6 is a low risk and score 10 is a high risk. Yes, if PSA value, normal PSA value कितना होता है? 4 to 10 nanogram per ml. This unit is also important. In examination there is a nanogram, there is a microgram, there is a milligram. Yes, so nanogram per ml is normal PSA value and low free PSA suspicious of the prostate cancer. Yes, free PSA यहाँ पे अलग चीज हो जाती है. आगे देखते हैं अपन. So RCC we already discussed RCC or the hypernephrom and there is a detailed class available on the RCC, the mnemonic discussion and already uploaded in the topic group. Yes. So RCC means the hypernephroma gravidates tumor. This is radio resistant, chemo resistant. So we already discussed R means radio, C for chemo, and R for resistant. So most common type we already see C for clear cell, and most common method of the diagnostic investigation in the CT scan. Yes, this is also NEET PG previous year topic. Now this operation Stephen Fowler orchipaxy done for the undescended testes and first stage is the clipping of the testicular vessels. तो स्टीफन फाउलर orchipaxy में क्या करते हैं अपन? जो टेस्टिकुलर वेसल्स होती हैं उनकी क्लिपिंग करते हैं. तो किसके लिए होता है? अनडिसेंडेड टेस्टिस के लिए. नाउ प्रोस्टेटिक कैंसर रूट ऑफ द स्प्रेड टू लंबर प्लेक्सिस बाय द बैटसन्स लंबर वर्टेब्री बाय द बैटसन प्लेक्सिस. तो लंबर में आता है बी, बी फॉर यू कैन रिमेंबर बैटसन. सो प्रोस्टेटिक कैंसर कहाँ? लंबर वर्टेब्रे में कैसे स्प्रेड होता है? बैटसन प्लेक्सिस से. बी से बी मिला सकते हो. इसको प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस भी अपन कह सकते हैं. यस, यहाँ पे केस अपने को दिया है लेस देन 75 ईयर ओल्ड मेन with low PSA means less than 10 nanogram per ml. Gleason score is 6 means the low risk and a small tumor focus. So what you do in this case? Yes, this is low risk prostatic cancer. Yes, low risk, so managed by the active surveillance only. And how we do active surveillance? When we do active surveillance, when the Gleason score is 6, tumor is located on the early stage, mean the 1C, small volume of the prostate disease in the biopsy and low PSA level. So in this situation, we do digital rectal examination and PSA monitoring in every 3 to 6 months and trust guided prostate biopsy in 1 to 3 years. Yes, so biopsy is an invasive investigation, so we do in the 1 to 3 year. You can remember. So just you can remember the key number 1, 3, and 6. So 1 क्या है यहाँ पे? 1 is T1C stage. 3 means you can remember every 3 to 6 months you do the PSA. 1, 3, and 6 means every 3 to 6 months you do the PSA monitoring. Yes, and in the 6 Gleason score. So यहाँ पे 136 क्या है? 1C वाली स्टेज में 6 वाले आप ग्लीसन स्कोर में हर 3 to 6 मंथ में PSA करवाएंगे. यस, और हर 1 ईयर में ट्रस्ट गाइडेड प्रोस्टेटिक बायोप्सी कराएंगे. तो कहने का मतलब है जितने भी वर्ड आ रहे हैं वो 136 में आ रहे हैं, तो आंसर यदि आप भूल जाते हैं तो उनके बीच में लगा सकते हैं, तुक्का आपका सही हो सकता है. Now, next अपन चलते हैं कार्सिनोमा पेनिस. So penis, painless. Yes, as the name suggests, painless condition. This present as a late because painless. So patient present as a late and superficial structure more commonly affected. So which superficial structure in penis is? Glans penis is more commonly affected. So superficial, yes. So you can say glans penis is superficial structure. So superficial inguinal lymph node is involved. Superficial inguinal lymph node is involved, and they may be infected and large. Yes, and large fungating lesion is there, and which named staging is Jackson. So we already discussed so many named staging in one session. You can revise and just type on the topic group telegram staging. You will find the session. So Jackson staging. So we remember penis producing the jerk. Penis producing the jerk. Jerk means jerkson. Jerkson means Jackson. तो जैक्सन स्टेजिंग किसके लिए होती है? सीए पेनिस के लिए. यस. नाउ सो प्री कौन कौन सी प्री मेलिग्नेंट कंडीशन यहाँ पे होती है? सारी बी से ही शुरू होती है. बावन डिजीज, पेलेनाइटिस जीरोटिका, ऑब्लिटेरेंस, बस्का, लोवेंस्टिन ट्यूमर, इथ्रोप्लाकिया, क्वेट्रेट, ल्यूकोप्लाकिया, ये सारी यहाँ पे कंडीशन है. यस, तो यहाँ पे अपन ने देखा पेनलेस कंडीशन है. जर्कसन, जर्कसन पेनिस प्रोड्यूस जर्क. सो जर्कसन सन इज द पेनिस, जर्कसन इसकी स्टेजिंग होती है. अब इसमें स्टेजिंग क्या है? टी वन में केवल स्किन तक रहेगा. सबसे ऊपर क्या होती है? स्किन. टी वन इज स्किन. टी2 कार्पोरा स्पोंजियोसोम और कैवर्नोसोम. स्पोंजियोसोम और कैवर्नोसोम एज एस फॉर सेकंड. T3 on the urethra. So when you zoom the picture of the urethra, you found this shape is a three shape. थ्री जैसा लगता है यूरेथ्रा. सो T3 वाली स्टेज हो जाएगी यहाँ पे, एंड T4 में इसके बाद एडजेसेंट पे चले जाएंगे. यस,
बाकी लिम्फ नोड अपन ने देख लिया, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड इज है। यस, एंड इफ द कैंसर यदि लो ग्रेड में है या लो स्टेज में है तो मुंह सर्जरी करेंगे। यस, मुंह माइक्रोग्राफिक सर्जरी करेंगे, जो अपन बीसीसी के लिए भी करते हैं। तो मोहल्ला याद कर सकते हो, मोहल्ला मुंह सर्जरी, ला मतलब लो ग्रेड के लिए करते हैं। यदि 2 सेंटीमीटर से बड़ा स्टंप है तो पार्शियल पेनेक्टोमी करनी पड़ेगी। इफ द लार्ज लिम्फ नोड और एफएनएसी पॉजिटिव वी डू इलियो इंग्वानल लिम्फ नोड डिसेक्शन। And pre-malignant condition we already discussed. All the conditions started from the B bound disease, Buschke-Lowenstein tumor, yes, a high risk HPV 16 and 18. And you can also see in this picture also erythroplakia of the quadrate. So this is the CA penis. Yes. Now, so next PYT is the graded of the vesico-ureteric reflux. So just remember this sentence: unusual kidney drinks their pee. Unusual kidney drinks their pee. Unusual kidney drinks their pee. Unusual U for ureter, K for kidney, D for dilatation, tortuosity and the papilla. So शुरू वाले में क्या होगा? विदाउट डायलिटेशन, उसके बाद क्या होगा? डायलिटेशन शुरू हो गया, फिर और ज्यादा हुआ, फिर लॉस ऑफ दी पेपिलरी पैटर्न। तो यहाँ पे स्टडिंग भी पूछते हैं। Yes, so this topic we already see. Now, Peyroniers's disease. Yes, so P4 Peyroniers's disease, P4 plaque and P4 Dupuytren's contracture. Yes, so how this happen? क्या होता है इसमें? Injury to tunica albuginea, there is a microhemorrhage and there is a penile plaque become penile bend and last में हो जाता है Dupuytren's contracture. Yes, so कौन सा प्रोसीजर करते हैं इसमें अपन? नेसी बर्ट प्रोसीजर। नेसी बर्ट प्रोसीजर. So we already created the named surgery session. We already conducted the session 100 plus named surgery in the one of the our surgery class. You can attend from the topic group or from the YouTube. Yes, so नेसी बट प्रोसीजर करते हैं इसमें। तो अपन कैसे याद करेंगे? यहाँ पे नेसी बट किसके लिए करते हो? नेसी बट में आता है एन। यस, नेसी बट में आता है NSBT। यस, सो टीटी मीन्स टेढ़ा, टेढ़ा पेनिस। यदि टेढ़ा पेनिस हो गया मीन्स पायरोनियर डिजीज, उसमें अपन ये करेंगे। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें? प्लाइकेशन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द डिफॉर्मिटी एंड प्रोसीजर डन वंस एक्टिव फेज सबसाइड। जब इन्फ्लामेशन सबसाइड होता है तभी तभी अपन यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं। यस, so next topic is fracture of the penis. So popping sound during the intercourse, bluish discoloration of the penis and scrotum. So इसमें एक important चीज है egg plant deformity. So egg plant deformity कहाँ मिलती है? Fracture of the penis में. Yes. ट्रीटमेंट होगा इसमें इवैक्यूएशन ऑफ द हेमेटोमा एंड कार्पोरा रिपेयर। यस, नाउ सो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन द नेफ्रोलॉजी, डीएमएसए। सो डीएमएसए एम4 किसके लिए होती है? मॉर्फोलॉजी के लिए। डीएमएसए किसके लिए? एम4 मॉर्फोलॉजी के लिए। यस, डीटीपीए को याद कर सकते हो, ट्यूब्यूल। डीटीपीए मींस ट्यूबुल पे एब्सेंट। ट्यूबुल पे एब्सेंट मींस ट्यूबुल वालों के लिए नहीं होगी, तो फॉर ओनली ग्लोमेरुलर filtration. Make 3 is a 3, so this is for the all three function like renal function, glomerular filtration, tubular excretion. इसके बाद investigation of choice for the UPJ obstruction is MEG 3 scan. UPJ 3, UPJ में कितने लेटर आ रहे हैं? UPJ 1 2 3, MEG 3. Yes. Next, DMSA. DMSA is a M and S, so you can remember S for stricture, M for morphology और S for scarring. So DMSA को किस किस के लिए कर सकते हैं? S for stricture के लिए, S for scarring के लिए, M for morphology के लिए। Captopil DTPA, Captopil DTPA is a CC, screening is a CC, so screening in renovascular hypertension, and this is investigation of the choice इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर VUR क्या होता है? MCU। सो आपको, आप दो चार बार बोलोगे VUR MCU VUR MCU VUR MCU तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से अपन ने किडनी के इन्वेस्टिगेशन टिप्स पे किए। डीएमएसए में क्या रहा? M4 मॉर्फोलॉजी। डीटीपीए ट्यूबुल पे एब्सेंट मींस नो ट्यूबुलर, किसके लिए होगा? ग्लोमेरुलर के लिए। मेक 3 तीनों फंक्शन के लिए होगा। यस, पीयूजे के लिए, यूपीजे के लिए, मेक 3। डीएमएसए में क्या आता है? M4 मॉर्फोलॉजी, S फॉर स्कारिंग और S फॉर स्ट्रिंचर। यस, कैप्टोपिल एंड स्क्रीनिंग दोनों में सीसी आता है। VUR MCU, सो इसे आप इसको याद रख लोगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज horseshoe kidney. So as H4 horseshoe kidney, H4 which radiological sign? Yes, H4 which radiological sign? हैंडशेक साइन, कोई साइन था ऐसा? तो रेडियोलॉजिकल साइन को सारा अपन ने डिस्कस किया हुआ एक सेशन में, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। The most common fusion defect of the kidney, yes, fused portion lies between L3 and L4 at the origin of the inferior mesenteric artery. So ascent of the kidney is
prevented by the inferior mesenteric artery. So this inferior word is important. In examination they can put the superior word. Yes, तो यहाँ पे inferior word ध्यान में रखना है inferior mesenteric artery के लिए. So इसको horseshoe kidney को ऊपर जाने से कौन रोकता है? Inferior mesenteric artery. So you can remember I am preventing the ascent of the horseshoe kidney. I am preventing. I am. I for inferior, M for mesenteric. Inferior mesenteric artery. So adrenal gland remain in the normal position. Obviously, this is more common in the male, and male ride horse more common than the female. Yes, and commonly associated with the renal cell carcinoma, Wilms tumor, multicystic dysplastic kidney Turner syndrome. Yes, so because horseshoe kidney, so kidney related tumor is there. Patient may asymptomatic, may present with dull renal pain, abdominal lump, urinary tract infection, increased angulation of the ureter, resulting in nephrolithiasis, hydronephrosis. Yes. And radiologically, this condition is diagnosed by the flower waist sign and handshake sign. So H4 horseshoe kidney, H4 handshake sign, H4 handshake sign. So horse पर सवार होकर आप फ्लोवर दो, horse पर सवार होकर आप किसी के पास जा रहे हो, उसको फ्लोवर दे रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो. So you are riding on the horse and you are giving a flower and you are making the handshake. Giving the flower means flower waist sign and handshake means handshake sign. Yes, so obviously many patients are is asymptomatic, but if the symptomatic, we do treatment. Yes, we do treatment. Yes. So only symptomatic cases में treatment करते हैं. Heminephrectomy is usually not indicated. Yes, until you need, yes, not indicated for the horseshoe kidney with unilateral RCC or the Wilms tumor because this can result devascularization due to the unpredictable blood supply to horseshoe kidney from the nearby major vessels. Yes, so horseshoe kidney में क्या याद रखना है? दो चीजें. इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी इसको ऊपर जाने से रोकती है, L3 L4 के लेवल पे होता है और इसमें H वाला साइन मिलता है, हैंडशेक एंड फ्लोवर बेस साइन. यस, so this point you have to remember. Now, yes, so next topic is parotid salivary gland पर अपन देखेंगे. सो यहाँ पे केस दिया है, स्लोली प्रोग्रेसिव स्वेलिंग विद वेरिएबल कंसिस्टेंसी लिफ्टिंग ईयर लोब इज सजेस्टिव ऑफ. सो slowly progressive swelling with variable consistency lifting the earlobe. So what is this condition? Is parotid this associated with the parotid gland pleomorphic adenoma. तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा किसको अफेक्ट करता है? P4 पैरोटिड ग्लैंड को, P4 इसके particularly superficial lobe को, and this is P4 penniless row growing operation and removing of the superficial lobe is known as a Petty's operation. So ये भी एक named operation होगा, Petty's operation. तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, माँ मीन्स मदर, सो मदर की एज में होता है, 40 ईयर की एज की मदर में होता है और मिक्स्ड ट्यूमर है, प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा. सो एडिनोमा माँ मीन्स मदर की एज में होगा, माँ मीन्स मिक्स्ड ट्यूमर. So this is most common benign salivary gland tumor, most commonly affect the parotid gland or the superficial lobe, and this is a mixed tumor, so epithelial and mesenchymal both the component. Tumor most commonly occur in the 40 age, obviously. Pleuromorphic adenoma, Ma means mother age group, 40 year of the age, and clinical feature is obviously this is painless, row growing, swelling, and this lifted ear lobule. Yes, and the variable consistency, lobulated form and variable consistency lifts the earlobe, no facial nerve involvement. Yes, and curtain sign is positive. Yes, cannot be moved above to zygotic bone. यहाँ से ऊपर तो उठाएंगे पर जाइगोमेटिक बोन से ऊपर ये नहीं जा पाएगा. यस, यदि इसके डीप लोब का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर इसमें टॉन्सिल फोशियल पिलर ये सब मीडियली पुश हो जाएगा डीप लोब के इन्वॉल्वमेंट पर. यस, सो यदि मैलिग्नेंसी हो जाए, व्हेन वी सस्पेक्ट द मैलिग्नेंसी, जनरली द ट्यूमर इज पेनलेस, बट इफ द पेन इज प्रेजेंट इन द ट्यूमर, सडनली इंक्रीज इन द साइन, अल्सरेशन ओवर द स्किन, facial nerve involvement, painful, yes, restriction of the jaw movement, then we can suspect the malignant transformation of this tumor. Investigation of choices FNAC, not the biopsy. Just please remember this point. We don't do biopsy in the parotid pleomorphic adenoma. Why? Because open biopsy contraindicated. Chance of the injury to the facial nerve और seeding the tumor. Tumor की भी seeding भी हो सकती है यहाँ पे, तो biopsy लेना यहाँ पे मना है. Yes. तो यहाँ पे सुपरफिशियल लोब में सुपरफिशियल पैरोडेक्टोमी करते हैं. मैलिग्नेंट हो गया तो रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी करेंगे. मैलिग्नेंट हो गया तो रेडिकल पैरोडेक्टोमी करेंगे. इसको कैसे अपन ने पता किया? नॉर्मली काफी शांत ट्यूमर है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है,
और यदि मैलिग्नेंट हो गया तो पता है नाम में मैलिग्नेंट हो गया तो पेन भी आएगा, जल्दी भी बढ़ेगा, फेशियल नर्व को भी इन्वॉल्व करेगा, तो रेडिकली उसको उड़ाना पड़ेगा। यस। तो नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, ये तो अपन ने देख लिया, प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा। Yes, most common neoplasm of the salivary gland is pleomorphic adenoma, but most common malignant tumor of the salivary gland. Malignant started from the M4 mucoepidermoid carcinoma. Mucoepidermoid carcinoma. The most common benign tumor of the salivary gland in children is hemangioma. हमारे children means hemangioma बच्चों में most common benign tumor है, but most common malignant tumor in the children is also mucoepidermoid carcinoma. So most common malignant tumor in adult also M mucoepidermoid carcinoma, in the children also M mucoepidermoid carcinoma, but most common benign in children हमारे हमारे बच्चे हमारे means hemangioma, and adult में क्या होगा pleomorphic adenoma. Most common malignant tumor of the minor salivary gland, most common malignant tumor of the minor salivary gland is a adenoid cystic carcinoma. So you can remember minor Aditi is a minors, Aditi is minor, yes minor की Aditi, माइनर की अदिति से याद रख सकते हो। माइनर का मेलिग्नेंट कौन होगा? एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा। सो मोस्ट कॉमन ग्लैंड अफेक्टेड बाय प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा इज यस, मोस्ट कॉमन ग्लैंड अफेक्टेड बाय प्लूरोमॉर्फिक एडिनोमा पैरोटिड ग्लैंड ही होती है। ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड विद पेरिन्यूरल इन्वेजन किसमें होता है? एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा में। यस। तो अदिति क्या है? अदिति एक फीमेल है, अदिति एक नारी है, नारी है अदिति एक नारी है, इसलिए एडिनोसिस्टिक कार्सिनोमा में पेरिन्यूरल इन्वेजन होता है। एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, अदिति क्या है? नारी। नारी वर्ड किस में आता है? पेरिन्यूरल, न्यूरल मीन्स नारी मीन्स फीमेल। यस, तो हिंदी में अपन यहाँ पे देखा। The tumor that show hot spot in 99 MTC is Barthin tumor. So as you know, in the war there is so much fighting is there, so many hot scene is there. So war is a hot place. You can remember Barthin tumor, technetium 99, technetium 99 में क्या मिलेगा? Hot spot. Yes, so salivary gland tumor and their frequency. 90% of the minor salivary gland are malignant, where the parotid gland 90% are the benign. So name is minor, but the property is not minor, that are malignant. Minor is more malignant. Yes, please remember. Now, so next scenario is elderly woman, recent onset facial asymmetry, lump over the roof of the mouth for the past 1 year, solitary erythematous swelling with diffuse border of the left hard palate, biopsy show Swiss cheese pattern. Yes, so क्या देखा? There is a woman, there is a facial nerve involvement, means something perineural invasion. Yes, and left palate, and this Swiss cheese appearance. Yes, so this Swiss cheese is a favorite of the Aditi means adenoid carcinoma. तो यहाँ पे क्या है? ये अदिति की स्टोरी है, अदिति की स्टोरी, अदिति नारी है तो नारी है, पेरिन्यूरल इन्वेजन यहाँ पे हुआ, फेशियल एसिमेट्री इज देयर, यस फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट इज देयर। Now Aditi Nari, so perineural invasion is there, and this is second most common malignant tumor of the parotid gland. First most common malignant M4 mucoepidermoid carcinoma. So this is second most common malignant tumor, and obviously Aditi is doing the slow motion dance to slow growing tumor. Yes, and is located to submandibular gland. Yes, and also the minor salivary gland. सो यहाँ पे पेरोटिड सब मैंडिबुलर इनका माइनर का होता है, माइनर की अदिति यही होती है। हिस्टोलॉजी में स्विस चीज पैटर्न मिलता है, ऑब्वियसली अदिति इज अ गर्ल एंड गर्ल इज लविंग द चीज एंड स्विस चीज। Yes, and most commonly involved ये अपने यहाँ पे देख लिया। Histology, Swiss cheese appearance is there, and tubular variety is the best prognosis. So tubular two best friend है, क्या बोलोगे? two best friend है, tubular two best friend है, two best friend है तो अच्छा prognosis यहाँ पे हो गई। Solid is a worst prognosis. Solid बोला है but most bad prognosis. Name is solid but prognosis is not solid. This is bad. Yes. So high propensity of local recurrence, distance metastasis. Obviously, Aditi love the traveling to the distance places. And most commonly Aditi कहाँ जाती है? लंदन मीन्स लंग्स में सबसे ज्यादा ट्यूमर जाता है। ट्रीटमेंट में अपन ग्रोथ ट्यूमर को हटाएंगे, रेडिएशन थेरेपी देंगे। So Aditi is always ready for the taking the treatment. Always ready for the taking the treatment. Ready means radiotherapy. तो उसमें क्या देंगे अपन? रेडियोथेरेपी. यस। तो ये क्या देखा अपन ने? स्टोरी ऑफ दी अदिति. अदिति इज अ फीमेल, नारी मीन्स पेरिन्यूरल इन्वेजन. अदिति is eating the Swiss cheese, so Swiss cheese appearance in the histology. Aditi traveling the distance, so distance metastasis is there. Aditi traveling distance in the London, so lungs involvement is there. Yes, and tubular to be a best friend, best prognosis, solid, bad prognosis. Yes, these are the important point to remember. Now, so next is a hemorrhage. Yes, hemorrhage of the brain.
Now time for the active recall. Yes, what is the operation where we remove the superficial gland of the पैरोटिड? पैरोटिड के सुपरफिशियल लोब को हटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस ऑपरेशन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम सर्जरी वेयर वी रिमूव द सुपरफिशियल लोब ऑफ द पैरोटिड? Yes, type in the chat box. Yes, उसको बोलते हैं अपन पेटीज ऑपरेशन, पेटीज ऑपरेशन. सो प्लीज रिवाइज द नेम सर्जरी क्लास. आगे देखते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज. सब अरेक्नोइड हेमरेज. सब अरेक्नोइड इज अ बीएआर. सब अरेक्नोइड इज अ बीआर. बीआर फॉर द बेरी. सो बेरी एन्यूरिज्म. सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज बेरी एन्यूरिज्म. मोस्ट कॉमन इज ट्रॉमा. Obviously, head injury most common is trauma, but the subarachnoid in this berry. So second most common cause is the berry aneurysm. Now next is yes, subarachnoid. Sub means सबसे, अरेक्नोइड मीन्स खराब, सबसे खराब हेडेक. सो सर उसकी जिंदगी का सबसे खराब हेडेक मीन्स द थंडर क्लैप हेडेक. सो सब अरेक्नोइड, सब अरेक्नोइड में सबसे खराब हेडेक, थंडर क्लैप हेडेक इसमें होता है. सी एस ए प्रेजेंट विद जेंथ्रोकोमिया. जेंथ्रोकोमिया ट्रीटमेंट इज 2C, क्लिपिंग एंड coiling, and 3H. 3H means all the hyper condition, hypertension, hypervolemia, and hypervolemia means hemodilution, and is it Texaco star pattern is there. So subarachnoid में क्या याद करना? Subarachnoid bear means berienism, second most common. Subarachnoid सबसे खराब है डेक, thunderclap, CSF genthrocomacia. 2C and 3H you can remember, but just remember सब कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है. Hypertension, hypovolemia, hemodilution सब कुछ बढ़ रहा है, बढ़ाना है ट्रीटमेंट के लिए. Yes. Now Texaco star pattern is there. Yes. So this is NEET PG 2020 previous year topic, and this is important. Now EDH. So EDH echo क्या बना सकते हैं? M for middle meningeal artery anterior branch. Yes, so EDH you can remember EDH. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ADH. ADH means anterior. So anterior branch of the middle meningeal artery. ऑप्शन में anterior posterior से भी मिल सकता है. तो anterior branch of the middle meningeal artery, and 2L. 2L means lens shape or lentiform opacity, and lucid interval is there, and this is not cross the suture line. So why this more dangerous? Because it is not crossing the suture line. So एक ही जगह बढ़ता है इसलिए ज्यादा dangerous है. Now. Yes. So next is intraparenchymal pressure hemorrhage. P4 you can remember, pressure means hypertension. So most common cause is hypertension. P4 putamen is most common site. So कुछ नहीं याद करना है. Intraparenchymal hemorrhage, P4 pressure means hypertension most common cause, and P4 putamen is most common site. Now, subdural hemorrhage is a BD. BD means you can remember breathing vein. Yes, BD means बूढ़े लोग means old age. BD means बेवड़े means alcoholic. So बूढ़े और बेवड़ों में means old age and alcoholic में ये ज्यादा मिलता है. Subdural SB second baby syndrome में भी ये होता है. क्रिसेंट शेप ओपेसिटी मिलेगी, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक ऐसे टाइप मिलेंगे. सो सबड्यूरल में कुछ भी नहीं है. सबड्यूरल ब्रीजिंग, यस, ओल्ड एज, अल्कोहलिक, बॉक्सर्स, सेकंड बेबी सिंड्रोम, ये सब यहाँ पे होगा. Yes, so pain on the one side of the neck that worsen with the food, and the ultrasound image showing stone in the Barthin duct. So what is this situation? एक तरफ pain हो रहा है, stone दिख रहा है. So this is the stone in salivary gland means silolithiasis. So submandibular gland highly viscous secretion होते हैं. So most common site of this salivary gland stone is the submandibular gland. Yes, yes. तो सबमेंडिबुलर ग्लैंड. एम फॉर म्यूकस. म्यूकस इज हाईली विस्कस. सो यहाँ पे स्टोन ज्यादा बनते हैं. सब मोस्ट कॉमन साइट फॉर द स्टोन इम्पेक्शन इज नियर द पंक्टम और द हाइलम, एंड वेयर द डक्ट बेंड ओवर द माइलोहायोid muscle. Yes, acute painful swelling in the submandibular region is there, aggravated with food. Obviously, when you are taking the food, saliva is produced. When the time of the saliva production, due to this impacted stone, the patient फीलिंग द पेन. यस, सो ये जो स्टोन फंसा हुआ है, जैसे ही पेशेंट खाना शुरू करता है, सलाइवा प्रोड्यूस होती है, उसको पेन हो जाए. 1-2 घंटे बाद ये पेन सही हो जाता है. तो रिजोल्व 1 to 2 hour आफ्टर द मील इज कंप्लीटेड. यस, सो दिस इज द सबसे ज्यादा क्या होता है? सबमेंडिबुलर स्टोन होते हैं, ओपेक होते हैं, रेडियोग्राफ में दिखते हैं.
4 mm से कम के हैं तो डोरमिया बास्केट से हटाएंगे, और उससे ज्यादा बड़े हैं तो फिर आपको उनको लिथोट्रिप्सिस से फोड़ के फिर डोरमिया बास्केट से हटाना। तो स्टोन ऑफ द लेस देन 4 mm आर रिमूव्ड वाया डोरमिया बास्केट और यूजिंग एंडोस्कोप और अल्ट्रासाउंड गाइडेड मेथड अंडर लोकल एनेस्थीसिया। So you can remember door 4. So door 4 the less than 4 mm stone. Yes. Stone more than 4 centimeter, broken first using the intracorporeal or extracorporeal lithotripsy, then removed via the dormia basket. पहले बड़े स्टोन है 4 mm से बड़े, उनको 4 mm से छोटा बनाएंगे, फिर डोरमिया बास्केट से निकालेंगे। जैसा नाम बता रहा है वैसे ही है। सो नर्व इंजर्ड, कौन कौन सी नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज हाई मर्ली। So you can remember this mnemonic high merly. High means hypoglossal, merly means marginal mandibular, lee means lingual. Yes, lee means lingual. सो कौन कौन सी ग्लैंड सबमेंडिबुलर ग्लैंड के रिमूवल में, कौन कौन सी नर्व सबमेंडिबुलर ग्लैंड के रिमूवल में इंजर्ड हो जाती है, वो है हाई मर्ली। हाई क्या याद आया, हाइपोग्लोसल, मर्ली मार्जिनल, मैंडिबुलर, लीफोर लिंगुअल। यस, तो यहाँ पे अपन ने देखा साइलोलिथियासिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइलोलिथियासिस। आगे चलते हैं, रेनुला। यस, रेनुला। सो कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हेन वी डोरमिया बास्केट से कब हटाते हैं अपन, डोरमिया बास्केट से स्टोन कब हटाएंगे। यस, पैटीज ऑपरेशन किसको बोलते हैं। टेक्नीशियम 99 में हॉट स्पॉट मिल रहा है तो कौन सा ट्यूमर है। येट, यस, हॉट स्पॉट इन द टेक्नीशियम 99 लेस देन 4 mm, वेरी गुड डॉक्टर एन। लेस देन 4 mm में अपन डोरमिया बास्केट यूज करेंगे। जिससे उसका फोटो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप सेशन के बाद नेट से देख लेंगे। यस, yes, so next topic is the renula. Next topic is renula. So as the name suggests, renula is a LA. So this is related to the L. L means lingual gland. So this is mucus extravasation cyst arising from the sublingual gland. Yes, so renula is a trans-illumination. Renula produce a trans-illuminant mucocil. So renula is a LA. LA means lingual, means sublingual gland. Renula is a LA means lumination, translumination. Yes, translumination होता है और फोक बेली की तरह ये प्रेजेंट करता है। सो रेनुला मीन्स रेन, यू कैन रिमेम्बर रेन में फोक दिखते हैं, रेन में फ्रॉग दिखते हैं आपको, सो फ्रॉग बेली की तरह प्रेजेंट करता है। सो रेनुला के दो टाइप होते हैं, ओरल रेनुला एंड सर्वाइकल और दी प्लंजिंग रेनुला। यस, ओरल रेनुला में क्या होते हैं, ओरल इज बिनाइन सिस्टिक एक्सट्रावर्सेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ द सबलिंगुअल फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लक्चुएशन, ट्रांसल्यूमिनेशन और ऑल पॉजिटिव मैनेज बाय द ट्रांस। Yes, marsupialization, definitive management is accession may resolve spontaneously, but the cervical or plunging is rare type. Yes, arising from the also sublingual gland, intraoral or cervical swelling. So we do USG or MRI. Management is excision of submandibular gland plus aspiration of the saliva आउट दी सेक, सलाइवा को भी यहाँ पे एस्पिरेट करना पड़ेगा। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हर्निया। सो वी ऑलरेडी कंडक्टेड द सेपरेट स्मॉल सेशन ऑन दिस टॉपिक्स आल्सो। सो हर्निया में अपन देखेंगे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट हर्निया। यस, तो अब यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करेंगे, जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यस, इन द सेकंड बेबी सिंड्रोम विच टाइप ऑफ द brain hemorrhage seen, which type of the intracranial hemorrhage seen in the second baby syndrome, 3H, 3H2 से related to which, and 2L related to which intracranial hemorrhage। ये से किससे related है, 3H थेरेपी किससे related है, जेंटोक्रोमेशिया किसमें होता है। यस, टेक्सिको कार्पेटन का मिलता है, वेरी गुड। सबड्यूरल, सबड्यूरल में क्या मिलता है, सेकंड बेबी सिंड्रोम। यस, सेकंड बेबी सिंड्रोम में होगा सबड्यूरल, एल्कोहलिक में होगा, ओल्ड एज में होगा, बॉक्सर्स में होगा। यस, yes, Dr. Gayatri, very good. Now, next is inguinal hernia. So, inguinal hernia is two type, direct, indirect. Yes, so we are discussing the difference, important point between direct, indirect and femoral. Yes, so direct in inguinal hernia, direct कैसा लिखता है, direct D, D किस में आता है, old age में. So ये मिलेगा old age में. So direct in the old age. Di means क्या होता है, bi. So this is bilateral mostly. Direct inguinal hernia, dies means by two. So this is bilateral mostly and D means old age. Yes. So D, डायरेक्ट का D देखेंगे, D is look like the hemispherical shape. So this hernia क्या कैसे प्रेजेंट करता है, hemispherical shape. D कैसे दिखता है, hemispherical.
And you can say sec is medial to the inferior epigastric vessel. So medial again has the D. So sec is medial to the inferior epigastric vessel, and sec is posteromedial to the cord. So posteromedial D means direct. Sec is medial to inferior epigastric vessels. Yes, and D4 directly goes from the Hasselbalch triangle and reduce on the by the line down. Obviously, this. This direct hernia is very good boy, very good. Yes, बात मानने वाला है अपनी है, जैसे को वैसे बात मान लेगा डायरेक्टली, जैसे कहीं काम करेगा, रिड्यूस होने को होगा रिड्यूस हो जाएगा, दोनों तरफ जिस जिस तरफ बुलाओगे उस तरफ आ जाएगा, तो एक तरफ अपनी बात मानने वाला ट्यूमर है. यस, so this is the command following, no, not the tumor, this is the command following hernia. So this hernia is very command following. As we say reduce, so reduce. As we say both side, so both side. Yes, so काफी ज्यादा अपनी बात मानने वाला hernia is. So reduced by lying down, and D is a half circle. So this is a half variety, means incomplete variety. And D for the deep inguinal, D for D. So swelling appear on the deep ring occlusion. Yes, so ये सब हो गया यहाँ पे डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया के बारे में. यस, तो इसके नाम में डी आता है, बट यहाँ पे है जिमान टेक्निक में द इम्पल्स एट द सुपरफिशियल रिंग, नॉट एट द डीप रिंग. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. Yes. Now next is indirect hernia. So indirect is I. Indirect started from the I. I means one. I look like one. Means this is unilateral. Finger in imagination tells impulse felt as the tip of the little finger. So tip में भी I आता है, little finger में भी I आता है. I means indirect. Yes. Now, so shape of the indirect hernia is pyriform. You can see in this picture, pyriform look like the eye. So yes, so shape कैसा होगा? Pyriform जैसा. Hemispherical is D. This D alphabet is look like the hemispherical, and femoral is retort shape. Femoral is retort. Why? Femoral has a retort shape. So when you see in the retort, spelling of the retort is a OR, femoral is a OR. So femoral is retort shape. Yes. Now. So next is femoral, below and lateral to the tubercle. So femoral, you can remember femoral, below and lateral to the pubic tubercle. Above and medial is indirect hernia. Yes, बाकी जो direct indirect वो. So femoral is below and lateral to the pubic tubercle. Inguinal hernia is above and medial. So you can remember indirect hernia, direct hernia. In means inward, above and medial. So इन hernia को तो ऊपर खींचोगे कैसे खींचोगे? Above and medial. Yes. Now next is consistency. So soft and elastic is intestine. Duffy granular is omentum. So how we can remember D. These look like O. O for omentum. So Duffy granular is omentum. Soft elastic, intestine is soft elastic. Yes. Now you have to type in the chat box. Yes. So this direct hernia is something the good hernia is following our command, but indirect hernia is a bad. Yes, direct hernia is following our command. To direct hernia is look like the good boy, and indirect hernia is some irritating boy. Yes, so you can see. तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करते चलेंगे. यस, डायरेक्ट ओल्डर एज कौन सा अन्य मिलेगा? यस, विच अन्य इन द ओल्डर. ओल्डर में क्या होता है? ओल्डर एज अ डी. डी फॉर यू कैन रिमेंबर डायरेक्ट. सो यंग में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट. यस. नाउ रिड्यूसिंग ऑन द लाइंग डाउन, रिड्यूस हो रहा है मीन्स अपनी बात मान रहा है, डायरेक्ट अपनी बात मान रहा है, डायरेक्ट. यस. रिड्यूस मोस्टली बायलेटरल, डायरेक्ट. Usually unilateral. To start is indirect. Yes, hemispherical D shape. D means direct. Pyriform is I shape. यस, तो ऐसे फटाफट से आंसर यहाँ पे दे सकते हैं. इनकम्प्लीट वेराइटी मीन इनकम्प्लीट अल्फाबेट, हाफ सर्कल. यस, यू कैन रिमेंबर डायरेक्ट. यस, सो यू कैन easily appreciate this. Demand technique, impulse at the deep ring is direct. Super. Yes, demand technique. आगे अपन देखेंगे यहाँ पे, वापस से रिवाइज कर सकते हैं. यू कैन रिवाइज दिस. यहाँ पे देखो, डिमांड टेक्निक में इम्पल्स मिलेगा सुपरफिशियल रिंग में, डायरेक्ट में ये उल्टा है. डायरेक्ट में डी आता है, बट इम्पल्स कहाँ मिलेगा? सुपरफिशियल रिंग में. यस. नाउ नेक्स्ट इज finger invagination. Impulse felt as the tip of the finger, tip of the little finger, tip and little as the eye. Eye for indirect hernia. Yes. Now, so this is all about the direct and indirect inguinal hernia. आगे बढ़े. Yes. So next is modified Maastricht classification. Modified Maastricht classification. Now, so modified Maastricht classification is the five class: first, second, third, and fourth. Yes, first related to the
Dead on the arrival. When the patient dead on the arrival, condition is uncontrolled. Tissue, heart, wall, वो also cornea के लिए करते हैं. So how many heart we have? Only one heart. So ये हो जाएगा class 1 में. Yes. And this is unsuccessful resuscitation, uncontrolled. Yes. Now second. So second you can write second like the U. Second को मिला के क्या बना सकते हैं? U. So you can make U alphabet by second. U means unsuccessful resuscitation. U for uncontrolled. एंड सेकंड मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोड्यूस द किड. किड मींस किडनी. सो इसमें क्या आएगा? किड. यस. तो सेकंड में क्या है? सेकंड है, इसको यू बना दिया. अनसक्सेसफुल रिससिटेशन, यू फॉर अनकंट्रोल्ड सिचुएशन. एंड दिस सेकंड टू पीपल गिव द किड. किड मींस किडनी. नाउ third alphabet is C. So C for you can remember control situation, C for anticipated, C for cardiac arrest, and all organ except heart, because heart we have only one heart, so first में चला जाएगा. Now fourth alphabet is D. D for you can remember sudden. Yes. So कार्डियक अरेस्ट इन ब्रेन डेड डोनर. कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड दोनों हो सकता है. इसमें भी सारे गुण ले सकते हैं हार्ट के अलावा. नाउ फिफ्थ में क्या आता है? फिफ्थ में यू कैन रिमेम्बर द आईपीडी. आईपीडी 5 नंबर का है ये आईपीडी. सो इसमें भी हार्ट के अलावा सब ले सकते हैं. अनकंट्रोल्ड ये भी रहेगा. अनएक्सपेक्टेड कार्डियक अरेस्ट इन द हॉस्पिटल इन पेशेंट. सो आईपीडी यू कैन रिमेम्बर आईपीडी पी फॉर 5. आईपीडी पेशेंट में हो रहा है तो क्या हो जाएगा? फिफ्थ. डीसीडी मोडिफाइड मैसेज क्लासिफिकेशन. नाउ तो क्या देखा अपन ने? सेकंड में क्या होगा? यू जैसा अनसक्सेसफुल, अनकंट्रोल, यू के सेकंड में आ जाएगा. सी किस में है? एंटिसिपेटेड कार्डियक अरेस्ट, कंट्रोल, ये इसमें चल जाएगा. यस. नाउ बाकी जो ऑल ऑर्गन एक्सेप्ट हार्ट इन सब में है, बिकॉज हार्ट किस में जाएगा? फर्स्ट वाले में. यस. So now next is minimum number of the lymph node examined for the effective staging. Minimum number of the lymph node examined for the effective staging. So you can see, पहले ये पढ़ लेते हैं. यहाँ पे स्टमक के लिए 16, ब्रेस्ट के लिए 10, इसोफेगस 15 lymph node, small bowel 10 and colon 10 lymph node. Now you can see this picture. This is the picture of the breast. Yes, breast ऐसा होता है circular, और यहाँ पे arm is 1. So this is look like 10. So breast के लिए कितना लेंगे अपन? 10 lymph node. This is breast. So breast is look like the 10. So 10 lymph node. Before bowel. So breast के लिए भी कितने lymph node आएंगे? 10. Small bowel के लिए भी 10 lymph node. Now you can see this esophagus, this stomach and this esophagus. So this esophagus is look like the 16. This figure look like the 16. So 16 lymph node in the stomach. 16 lymph node in the stomach or esophagus. Yes. Colon, you can see this colon. Colon ऐसे बनाते हैं अपन. तो colon में क्या बनेगा? 1 and this is 2. 1 and this is 2. So 12 number of the lymph node. Yes. So you can draw yourself and make the numbers. आसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे. ब्रेस्ट के लिए 10 हो गया. बिफोर ब्रेस्ट, बिफोर बावल, स्मॉल बावल के लिए भी 10 हो गया. Yes, stomach is, you can easily write the 16 in stomach, 12 in the colon. Yes. Now for the gallbladder, 6 lymph node. So gallbladders is this G. G's look like the 6. So 6 lymph node. Stomach is 16. Stomach ब्रेस्ट को लिख सकते हैं ब्रेस्टीन. यस. ऐसे भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो. इसोफेगस 1 और एस 5 जैसा, तो 15. कैसे भी करके आप इसको रिलेट कर सकते हैं. नाउ तो नेक्स्ट इज हाइड्रेटेड सिस्ट क्लासिफिकेशन. यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन आते हैं, WHO एंड गर्भी क्लासिफिकेशन. WHO एंड गर्भी. तो WHO क्या कहता है? WHO बोलता है CE 1 to 5 ऐसे चलते हैं. गर्भी में क्या क्या चलते हैं? 1 to 5. यस. रोमन में चलेंगे. सो यू कैन से CE1 इज इक्वलेंट टू टाइप 1 ऑफ द गर्भी, and C2 of the WHO is equivalent to type 3rd of the Garbi. C3 is equivalent to type 2. So how we can remember? 2 किससे related है? 3 से. 3 किससे related है? 2. 2 3 में है, 3 2 में. Yes. C2 of WHO is type 3. Just 2 में 3 लिख दो. C3 in the 2. यहाँ पे क्या है? 2 में 3 है, 3 में 2 है. बाकी सब ऐसे ही है. 1 में 1, 4 to 4, 5 to 5, 5 to 5. Yes. Now यहाँ पे देखेंगे C1 मीन्स 1. टाइप C1 WHO मीन्स गर्भी क्या हो जाएगा? टाइप 1. सो 1 मीन्स यूनी मीन्स यूनिलोकुलर अनएकोइक सिस्टिक लीजन विद डबल लाइन साइन. यस. नाउ C2 तो वो कौन सा हो जाएगा? 2 में जाएगा 3. सो टाइप 3rd. यस. एंड 2 पीपल यहाँ पे देख रखे हैं. 2 पीपल आर गिविंग द रोज, saying honey to each other. So 2 people giving the rose and saying the honey to each other.
तो एक दूसरे को रोज दे रहे हैं, हनी बोल रहे हैं, मीन्स रोजेट साइन और हनी कॉम साइन यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे लोग जब रोज दे रहे हैं, हनी दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा एक्टिव रहे होंगे, तो यहाँ पे एक्टिव एक्टिव तरह का सिस्टम मिलती है। नाउ सी थ्री कैन बी डिवाइडेड ए एंड बी, सो थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे देख लेंगे। तो वाटर लिली साइन व्हेन यू राइट द वाटर लिली, लिली को लिखते हैं LIL, सो दिस लुक लाइक द थ्री, दिस लुक लाइक द थ्री, यस। CB फॉर द बेटी, बेटी किसको बोलते हैं, बेटी मीन्स डॉटर, सो डॉटर साइन इन द CB, यस। C4 is heterogeneous, hypo or hyperechoic. C5 is solid or calcified. So solid S is look like 5. So solid and calcified. Yes, finally they become the solid and calcified. You can remember. So just remember this. यहाँ पे अपन देखेंगे first, second, third, fourth. Yes, this Garbi first, second, third, fourth, fifth. Yes, so first and second are active because in second they are saying the honey, they are giving the rose, so they are active. Yes, third, fourth are transitional. Yes, third is T4 3, 4 transitional, and fourth and five are inactive because the cyst become calcified solid, कैल्शियम डिपॉजिट कहीं भी कैल्सिफाइड हो गया, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, चीज काम नहीं करेगी अच्छे से, मीन्स क्या हो जाएगा इसमें इनएक्टिव। तो चीज क्या हो जाएगी यहाँ पे इनएक्टिव। सो ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, इसका डायग्राम से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, and better quality diagram are already uploaded in the topic group on the surgery section, you can revise. Yes, now the classification of the wound, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द वुंड। यस, so see in this picture, so class 4 is a dirty or infected wound. Yes, is there any audio problem? Please wait, I'm changing the mic. Yes, please comment about the audio. The audio is good. Yes. So class 4 means dirty or infected. So 4 means you can remember purulent. So purulent means pus. So if the pus is present, then the class 4 or the dirty infected means you can say 4 class 4. So more than 4 are old perforated viscera, more than 4 are old traumatic open wound, more than 4 are old penetrating open wound. So anything perforated, penetrated, traumatic open wound, more than 4 are in the 4 class of that is dirty or infected. So D is the fourth alphabet. So D is the fourth alphabet. तो D for dirty किसमें आएगा, फोर्थ क्लास में आएगा। यस, तो इसमें देखते हैं अपन द surgical site infection is risk with antibiotic prophylaxis and without antibiotic prophylaxis. So just remember this rule. एच भी यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं 4, जस्ट डबल द 4 करेंगे तो कितना आएगा 8%। और 4 के बाद क्या आता है इन अल्फाबेट इन द नंबर, 4 के बाद आता है 5, सो 4 इंटू 5 कर देंगे 20%। तो जस्ट रिमेंबर दिस रूल, द क्लास इन द surgical site infection without antibiotic prophylaxis, you have to do just double the class, mean the 4 class just double means 2, so 8%. Yes, and without antibiotic prophylaxis just multiply the next number to 4 is 5, just multiply, this is 20%। you can apply this rule in any। yes, क्लास थर्ड का डबल कितना होगा 6%, थर्ड का नेक्स्ट नंबर द थर्ड इज 4, सो 3 इंटू 4 इज 12, सो 12% इज देयर। यस, नाउ सेकंड इंटू सेकंड इज, यस सेकंड में क्या आएगा थर्ड, सेकंड का नेक्स्ट क्या जाएगा थर्ड, सेकंड इंटू नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे 9%। ऐसे 1 में 2 एंड 1 to 2%। सो दिस इज द इजी रूल फॉर calculating the risk। Yes, so class 4 alphabet is D for dirty or infected wound, 4 means purulent, तो pus is present, perforation again 4, इसमें भी ये 4 आता है। Yes, so if is no such condition then this is class third means contaminated, so contaminated C is the third alphabet, so contaminated, तो obviously यहाँ पे pus नहीं होगा, so non purulent ये होगा, but यहाँ पे inflammation चलेगा। इसके बाद अपन देखते हैं क्लास सेकंड, इन क्लास सेकंड क्लीन एंड कंटामिनेटेड। सो क्लीन कंटामिनेटेड इज टू वर्ड्स, क्लीन प्लस कंटामिनेटेड, हाउ मेनी वर्ड्स, टू, क्लीन प्लस कंटामिनेटेड 2 वर्ड्स, सो क्लास 2। यस, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पस भी नहीं है और इन्फ्लामेशन भी नहीं है। यस, नाउ
So next is class first. Class first is clean. No pus, no inflammation. Class first is clean. So clean surgery कौन सी होगी? See this girl. This girl, what would you see in this girl? इसमें क्या दिख रहा है? Beautiful neck, beautiful all the beautiful organ. कौन से beautiful organ दिख रहे हैं? Beautiful neck, beautiful heart, beautiful breast, beautiful knee, yes, beautiful hip. So यहाँ पे ये सारे organ की सर्जरी यहाँ पे हो जाएगी. थायराइड, नी, हिप, हर्निया, ये सारी सर्जरी आ जाएगी. सो ब्रेस्ट से मेस्टेक्टोमी, हिप पे हर्निया रिपेयर, थायराइड पे थायरोइडेक्टोमी, ब्यूटीफुल नेक, सो नेक कंटेंट है थायराइड, सो थायरोइडेक्टोमी, beautiful knee and hip, so knee and hip arthroplasty and exploratory laparotomy, beautiful abdomen, so exploratory laparotomy. Yes, so these are the clean surgeries. These are the clean surgeries. Class first में आएगी. Yes, so now ऐसे कोई पूछ ले इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी, इलेक्टिव इज टू, सो टू सेकंड टाइप की होगी. यस, नाउ so next is Browder's chart for the calculation of the burn surface area for the children. So we already discussed in the differentiation. You can revise now. So these are the common incision for the appendectomy, and this is the Bismuth-Strass classification. We already discussed. You can attend this session. Yes. Suture material. There is a separate session already available on the suture material. Yes, and many separate session we already conducted, like the session for the eclasia cardia, session for the various tumor, esophagus, stomach, RCC. Yes, gist tumor, gist को किससे पढ़ा था? Story of the काजल अग्रवाल is gist. Yes, forest classification, bleeding forest अपन ने पढ़ा था. Yes, now this is gist story of the काजल अग्रवाल. You can remember, ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिए. Yes, so these are the recorded session. Many of the Telegram live already uploaded on the topic group. You can revise. Yes, so we are not making this this session much lengthy. इसको अपन यही फिनिश कर रहे हैं. काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन जितने भी नेम्ड क्लासिफिकेशन है वो सब अपन ने डिस्कस कर लिए. यस, तो about 200 plus high yield mnemonics in the surgery. Yes, so please revise the topic group. You can finish the surgery in 1 to 2 hours. 1-2 घंटे में आप सर्जरी को फिनिश कर सकते हैं यदि आप जल्दी से जल्दी टॉपिक ग्रुप को रिवाइज करेंगे, तो जितने भी सेशन है फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे और सब कुछ अपन ने काफ़ी अच्छे स्टोरी से रिलेट करके पढ़ा है, तो कन्फ्यूज़न होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. तो थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन.